Today's topic is how can we assign a different type of arrays. Okay, and let me declare an array. Let's suppose float a. A is the array name and it's a 5. Okay, and how can I assign? By using the curly braces. So I am taking 1.2, comma 1.3, 3.34, 1.34, and I am taking 94.34, and just wait, comma into 3.456 and 90.98. Okay, so like this we can declare a float array. So first element, second element, third element, fourth element, and fifth element. Okay, declaring an integer array, and with this array I'm declaring a name. Let's suppose ARR, and I'm not giving any size here. I'm not giving any size. In that case, is it possible to assign array? Yes, definitely possible, no problem at all. And now there is no limitation, no limitation at all. Okay, so there is 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 8. So the size of the array created by the compiler itself. ठीक है, जो साइज है एरे का वो कंपाइलर खुद से क्रिएट कर देगा बाय द एलिमेंट्स, राइट। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देंगे यहाँ पर, उस हिसाब से साइज खुद से यहाँ पे क्रिएट कर देगा. सो इट विल बी दिस वन असाइन टू द जीरो लोकेशन. आई एम गिविंग इट्स 10 and 20. So it 20 and I'm taking 30, I'm taking 40. So the index value will be the same, na? 60, 70, 80, right? So this 10 value assigned to the index value 0, this 20 assigned to index value 1, and so on and so on, right? And if I want to print this, yes, happily we can do %d, comma, I'm ARR, and I'm giving here, let's suppose 5. Okay, so it will print the index value 5, and you can see the output, 60. And let me check, it's a 0 1 2 3 4 5. It's a perfect, right? And the next thing is, if I want to modify some value, so if I'm taking modify, I want to modify the same value, and I'm assigning here it's a 1 2 3 4. Yes, happily possible. And if I run this code, let me check, value will be modified, and the same location I'm printing. After modifying the value at the index 5, I'm printing the same value, and you can check output. The previous one is 60, the next one is 1 2 3 4 5. So like this we can modify the previous value of the array, no problem at all. But one thing is here, we have discussed yesterday, like what, I'm declaring some array with the size 3. Okay, later on I can assign data, right? Like this 10, okay, like this. At location 1 I'm assigning 30, like this, and at location 2 I'm assigning 9, right? So what happened with this, right? So it is possible, no problem at all, and I can print values as well, %d, comma, ARR, and I am printing 2 only, and you can check the same value will be there. But one thing is here, if you're not giving any size, if you're not giving any size, so this is not possible. If you are not giving any size, it will generate a compile time error. And what is the error? Let's see. The error is 2. Okay, the error is warning return type, sorry, this one is the error. Third line पर error array size missing in ARR. ठीक है, so you cannot left it blank. ठीक है, और आप सोचे कि मैं इसको blank छोड़ के later on I will assign some element. This is not possible.
अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ते हैं एट द सेम टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन टाइम यू हैव टू असाइन सम डेटा. ओके, यू हैव टू असाइन सम डेटा. सो दैट इज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, this is a valid one, right? And I'm just commenting this is the valid one, no problem. If I run there is no output actually, but there is no compile time error. ठीक है, this is possible. But if you try to declare an array with empty size and later on you want to assign individual elements to array locations, so this is not possible, right? And one thing is here, one more point is, let's suppose, can I give the one size 1 here? So let me check. Want to build this will be compiled, and if I run this, sure, there is no problem at all, है ना? There is no problem. But can I give the size 0? Can I give the size 0? Okay, little bit some confusion. Yeah, it is perfect. So size of 0 it is possible. And if I'm assigning some element, okay, if I'm assigning 10, let me check it will work or not. Yeah, definitely work. And if I want to print f %d comma a of 0, ठीक है, तो happily possible arr of 0, ठीक है, happily possible. ठीक है, I'm giving 10 and what is the output? Showing me some different output. I think. Let me check. 76. Some unexpected output is showing me, and let me check again. It's perfect. ठीक है, तो बच्चों क्या हो रहा है कि you can declare, but in Turbo C++ compiler you cannot declare with array of 0. It is not possible. ठीक है, तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर पा रहे हैं डिफरेंट IDE पे. कई बार ये कंपाइलर पे चेंजेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर एरे ऑफ 0 के साथ हम कर पा रहे हैं डिक्लेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट द आउटपुट इज अनएक्सपेक्टेड. कैन यू सी, आउटपुट इज अनएक्सपेक्टेड, राइट? एंड बट इफ आई एम गिविंग द साइज 1, सो द वैलिड इंडेक्स वैल्यू इज 0, है ना, एक इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि साइज -1 चलेगा. ठीक है, तो परफेक्ट इज देयर. बट इफ आई एम गिविंग 0 एंड जो भी आप साइज देते हैं हमेशा इंडेक्स आपकी साइज -1 जाती है, दैट मीन्स -1. ठीक है, अब -1 लोकेशन पर तो हमने कोई वैल्यू दी नहीं है, सो इट्स शोइंग मी सम रैंडम वैल्यू, सम गार्बेज वैल्यू. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज let's suppose I'm declaring an array having size 10, okay? And if I want to assign 10, 20, 30, only three values, is it possible or not? Yes, happily possible, no problem at all. But ठीक है, and if I print the value %d comma a of 0, 1, 2, so it will print 30, no problem, right? No problem, 30. And if I print 3, तो मैंने तो कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराई 10, 20, 30, मैंने तो कोई भी वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे, क्योंकि ये इंडेक्स हमारी 0 है, ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 है, तो मैंने थर्ड इंडेक्स पे तो कुछ प्रोवाइड नहीं कराया. देन व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट विल बी 0. ठीक है, व्हाई 0? आई एम टेलिंग यू द रीजन. एंड सपोज लाइक दिस, आई एम नॉट गिविंग एनी असाइनमेंट, हाँ, and random, just wait, yeah, it is okay, sorry. ठीक है, so -2 is printing. -2 is some garbage value because I am not assigning any value in that case, right? And suppose, देखिए यहाँ पर जनरली होता क्या है बच्चों, जब हमारी जो एरे है, आई एम शोइंग यू, ठीक है, आई एम शोइंग यू समथिंग, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, and definitely there are some index value 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. There are some index values. So total value are 10, and the declaration like this: int a size 10. And in that case, I am not assigning any value. Then what happens? The happening is this: by the compiler, by the C language compiler, turbo compiler, code block compiler. कंपाइलर क्या करेगा? इन ब्लैंक लोकेशंस पर कोई भी एक गार्बेज इंटीजर वैल्यू रख देगा, ठीक है? इफ यू आर नॉट असाइनिंग एनी वैल्यू, कोई गार्बेज इंटीजर वैल्यू रख देगा. सेकंड सिनेरियो क्या होगा? लेट्स सपोज you assigning some data, okay? You assigning some data like 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ठीक है? Like this. If you assigning like this, ठीक है? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 100. So you assign like this. Then what happen? These value 10 will be assigned to 0, 20 will be assigned to 1, 30 assigned to 2. This will happen. The third scenario is if you assigning only one value, one location, 10 you only assign, or either you assigning 2 locations, okay? Then what happened with this? 10 will be assigned to 10, this 20 will be assigned to this, okay? Rest of location compiler filled by the 0 value, okay? Compiler filled by 0 value. If you assign at least one element in the array, the rest of location will be assigned by 0. Otherwise, if you not assigned any element in the array, in that case compiler will provide a garbage value at every location, okay? So that's why when I run this code, then what happened? It's printing me, or at any location, if I run this code 3, it will print me some garbage value, showing me some garbage value, let's say, okay? But if I assign at least one location, in that case at location 0, because 10 will be assigned to the 0, it will print 10. But if I access any location, any other location, it will print 0. 9, I access 5, so again it will print 0. I want to access 7, again it will print 0. Okay? You can do like, you can assign 0 value to every location also. Yes, so in that case every location will be assigned by the 0, because 0 having some meaning. Okay, 0 some value, तो आपने 0 असाइन कर दिया तो ये असाइन हो जाएगी बच्चों किस लोकेशन पर? फर्स्ट लोकेशन पर, ठीक है? एंड वैल्यू कैन बी इन नेगेटिव आल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो आई एम असाइनिंग द वैल्यू -10 at 0 location. So let me check. Yes, -10 is there, and the rest of places the compiler filled what? 0 है, ठीक है? समझ में आया ये कंसेप्ट? चलिए, the next one is let's suppose I have 10 or I have 5, and I want to assign some values, ठीक है? Sorry, I'm assigning 10, 20, 30, 40, 50, 60. Then what happens? The happening is the size is 5, okay? But I assign more than the size, okay? In that case, if I run this code, right? So it is 10, 20, 30, 50 and 60. There is no issue. And if I run this code, printf at location %d and a of 5, then what happens? ठीक है? 76, ठीक है? There is no error तो नहीं आई, but same way again at location 5, because 5 is not a valid index value, because in this case index value will be go to from 0, 1, 2, 3, 4.
always size -1. If I assign some extra value, so there is no issue. एरर तो नहीं आई, ठीक है, एरर तो कोई नहीं आई, बट ये वैल्यू इसने एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है. हाँ, इफ आई एक्सेस लोकेशन 4 then it will print 50, no problem at all. But when I location 5, because 5 is not a valid location, because I am giving the size 5, so index value will be 0 to 4. And if I declare size 6, so the output will be 60. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो साइज क्या हो रहा है कि बच्चों, साइज हमारा यहाँ पर डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, एंड साइज से ज्यादा हम एलिमेंट दे रहे हैं तो वो उस एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. जितना साइज आप दे रहे हो उस एलिमेंट के हिसाब से वो ले रहा है, ठीक है. ये तो हुई कोड ब्लॉक की बात. अगर हम यही सेम कोड बच्चों अगर टर्बो पे रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जनरेट कर देता है एरर, राइट. आई एम शोइंग यू द सेम वे. लेट मी डिक्लेयर int a5 and I'm assigning some value. I'm giving 10, 20, 30, 40, 50, 60. I'm giving more than the size, ठीक है, I'm giving more than the size. Then what happen? If I run this code, it generate error carried too many initializers, ठीक है. देखिए वहां पर कोई एरर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर more than the size पर क्या हुआ, एरर आया, एरर ही आ गया. वहां पे क्या था, एरर तो नहीं थी, लेकिन वो लास्ट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है. कह रहा टू मेनी इनिशियलाइजर्स. टू मेनी इनिशियलाइजर्स का मतलब क्या हुआ कि आपने साइज से ज्यादा वहां पे इनिशियलाइज किया है. हाँ, अब कोई एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर. नेक्स्ट वन थिंग इज, इफ आई डिक्लेयर एन एरे विद साइज 0, देन व्हाट हैपन. इफ आई रन दिस कोड, अगेन एरर. एरे मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है. तो यानी कि एरे में एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए. 0 इज नॉट ए वैलिड. But in case of the code block, this will run perfectly, no problem at all. But it will not accept the value. Value को accept नहीं कर रहा था. But compile में करने में कोई problem नहीं थी. यहाँ पर turbo में ये error दे देता है. Array must have at least one element. ठीक है. हाँ, if size 1, there is no issue. ठीक है. क्योंकि कोड ब्लॉक में ये मुझे अलग आउटपुट थे और यहाँ पर ये टर्बो में अलग आउटपुट्स है, ठीक है. तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको. वी हैव डिस्कस अबाउट सम डिक्लेरेशन की पॉइंट्स विद एरे. नाउ वन थिंग इज हियर, इफ आई ओके, वन मोर थिंग, द सेम कोड विच आई रन फॉर कैरेक्टर एरे, लेट मी रन हियर char and I am declaring variable name char array and I am declaring some value equal to, and if I run a comma r comma u comma n, है ना. If I run this and if I printf printf percentile s comma char array, and if I run this, no problem at all, and the perfectly output is there. If I want to print individual element of the array, yes, happily possible. Array of 2 I want to print, and at place of the percentile s I need to write percentile c, okay, and it will print I am giving some new line, and it will print what, u, because at location 2, because this one is 0, this one is 1, and this one is 2, this will be working, okay. And one thing is here, the another type of declaration like I am just declaring like this, and equal to I am giving C language, and I am giving size here 10, okay. And I am printing here char array as well, char array 1, the name is 1, and char array 1, okay. And I am giving comment here. So if I run this code now, then it will print perfect C language. Okay, what happening? I'm not printing this. I think there's some of it. Yes, 9. No problem.
happening with today? I don't know. It's giving me different outputs. Why? Okay. Yeah, it's perfect. ठीक है, वो पुराना डेटा मैशअप कर रहा था, तो now all thing is okay. ठीक है, so you can see the changes on different compilers. On turbo compiler it's a different output with a string array, and on कोड ब्लॉक कंपाइलर इज अ डिफरेंट आउटपुट. ठीक है, चलिए कोड ब्लॉक का अपन बाद में देखेंगे क्या सीन है. तो अब ये बेसिक चीजें कंप्लीट हुई. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ आई वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, अगर यूजर से मुझे इनपुट लेना हो और मुझे सारे एलिमेंट्स को एक साथ प्रिंट करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे. सो आज के लिए इतना बचो. इट इज कंप्लीट फ्रॉम माई साइड. टुमारो वी डिस्कस रेस्ट ऑफ